Why should we give land to the Indians when it clearly says on the paper it belonged to the farmers? But surely you must realize that this is their home. These indigenous tribes have been living on this land for hundreds of years. Listen, this world is not fair. Some people win, some people lose. The whole world think they can tell Brazil what to do with her land. Sorry, no. We do what we please. हमारी पृथ्वी ये हमेशा गतिमान रहती है। बलों का एक गतिशील मेल जो दुनिया के चारों कोनों में जान डालने के लिए मिलकर काम कर रहा है। कई सहस्राब्दियों से दुनिया भर की संस्कृतियों ने उसे अपनी मां कहा है। We live on an incredibly beautiful planet. A home that we will hopefully pass on to generations to come. But as the years go by, it's becoming increasingly hard to imagine what kind of a world we're leaving behind us. We've spent the last 4 years traveling around the world, filming the stark reality that people now face from the threat of ecological collapse. It's now become very clear to us that there's one thing driving the destruction of our ecosystems faster than anything else. Let us show you how this very same thing might just also be our salvation. Climate and environmental scientists warn that we are fast approaching the point of no return if we don't make a substantial course reversal. We see really serious catastrophic effects in the next few years, certainly in the next decade or two. The world will be completely different from the way it is now. 1900 के बाद से हमने दुनिया भर में मौसम संबंधी आपदाओं में एक नाटकीय वृद्धि देखी है। पिछले 100 वर्षों की तुलना में पिछले 50 वर्षों में 4 गुना अधिक मौसम संबंधी आपदाएं आई हैं। We began to work together to move this issue onto the global center stage. There was a lot of discussion about the contribution from buildings and from industrial factories, but I became aware during that same period of time that there was another factor that was going undiscussed. And that is the role of animal agriculture, which I could see was playing some significant role around the planet. But this was the elephant in the room no one wanted to talk about. Whatever environmental issue you want to look at, from species loss to water pollution to water use to climate change, animal agriculture is one of the top causes. The critical, widespread negative impact of animal agriculture on our planet is undeniable. Severe global crises, from climate change and environmental damage to species extinction, hunger, poverty, disease, and antibiotic resistance, all of these have direct connections to animal agriculture and the massive inefficiency of our current food production systems. 2009 में विकीलीक्स द्वारा एक रिपोर्ट ने नेस्ले और अमेरिकी अधिकारियों के बीच
बातचीत का खुलासा किया जिसे द टूर डी होराइजन कहा गया। नेस्ले के अधिकारियों ने कहा कि उनके अपने शोध से पता चला है कि दुनिया में अगले 30 वर्ष के भीतर मीठा पानी पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। इसमें कहा गया कि मांस उत्पादन की वैश्विक मांग हमारे इस विनाशकारी रास्ते पर जाने का सबसे बड़ा कारण है। If you look at the impact that food choice has on global warming, it's very significant. Eating meat is huge for global climate, and that's something where personal choice is the determining factor. So there's the only case I can think of where individual human choice would have a big effect would be food. We're now over the line. And the idea that we're going to double meat production between now and 2050, this is just unsustainable. This is going to have to give. Our diet is taking us to an abyss. A significant reason why livestock production has been having such a huge impact on greenhouse gas emissions is because of the large surfaces of forests that have been destroyed in order to make room for pastures and for the growth of soybean and maize for feedstock production. हमारे जंगल कभी सबसे अद्भुत जीवन से भरे हुए थे। हाल के वर्षों में हमने मांस और डेयरी के लिए एक अतिरिक्त भूख बढ़ाई। जैसे जैसे अधिक मांस की हमारी मांग बढ़ी, हमें अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हमने अपने प्राचीन जंगलों को जला कटाकर नष्ट कर दिया ताकि उन जानवरों के लिए जगह बन जाए जिन्हें हम खाना चाहते हैं। चूंकि ये जानवर आज़ादी से घूम नहीं सकते जैसे वो स्वाभाविक रूप से जंगलों में करते हैं, उनके चराई क्षेत्र जल्दी ही खाली हो गए। इसलिए फिर से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटना और जलाना शुरू कर दिया। ज़मीन में आनुवंशिक रूप से उन्नत मकाई और सोया बोए और फिर इसे कीटनाशकों, शाकनाशकों और सिंथेटिक रासायनिक खादों में सराबोर कर दिया। पशु कृषि ने सचमुच ही हमारी पृथ्वी को बदल डाला है। हरी जमीन मानव फसलों के लिए, जो एक बड़ा क्षेत्र दुनिया भर में फैला है। मगर पशु कृषि के लिए जमीन, जो लाल रंग से दर्शित है, अब हमारी पृथ्वी का विशाल हिस्सा बन गया है, जो मानव फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन से कहीं ज्यादा है। Almost all the Earth's surface is now bears the mark of some kind of human impact, and most of that is livestock production. Agriculture has transformed the planet like nothing else. To produce milk, we farm an area about the size of Brazil. To produce beef, we farm an area about the size of Canada, the United States, the whole of Central America, Venezuela, Colombia, and Ecuador combined. To produce eggs, we farm an area the size of Sweden. To produce aquaculture feed, an area about the size of the UK. A plant-based diet would reduce the amount of land required to produce our food by 3.1 billion hectares. That's an area the size of the entire African continent. अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। प्राचीन और समृद्ध जैव विविधता वाली ये दुनिया धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अक्सर ये माना जाता है कि ब्राज़ील में बोया जाने वाला ज्यादातर सोयाबीन इंसानों के खाने के लिए है। असल में दुनिया भर में उगाए जाने वाले सोया का 6% से भी कम इंसानों को खिलाया जाता है। इसे ज्यादातर मांस के पशु के चारे के लिए उगाया जाता है। सोयाबीन दुनिया भर में निर्यात किया जाता है और अरबों मुर्गियों, मछलियों, सूअरों और गायों को खिलाया जाता है, जिन्हें हम रोज खाते हैं। जंगल केवल वन्य जीवों और पौधों की लाखों प्रजातियों के ही घर नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के वातावरण के अहम नियामक भी हैं। प्रतिदिन वे धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमारी हवा के लिए अरबों टन ताज़ा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। हर साल अनुमानित 18 मिलियन एकड़ जंगल नष्ट होते हैं, जो लगभग पूरे पनामा देश के आकार के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के लगभग आधे परिपक्व उष्णकटिबंधीय जंगल अब नष्ट हो चुके हैं, और कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि जब तक विश्वव्यापी स्तर पर
महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाती तो 2030 तक केवल 10% ही जंगल बचेंगे। One of the most precious things we have in the world is our rainforests. The rainforests are literally being chewed away by farmers who know they can make money by cutting another acre and then another acre and then another acre for meat. Aí nosso avô naquele tempo, cacique, então já falou, olha, você vai sofrer muito, porque o branco ruralismo। हर साल सैकड़ों आदिवासी जो अमेज़न वर्षा वन के मूल निवासी हैं, उनके गांवों को जलाकर राख कर दिया जाता है। उन्हें उनकी जमीनों से जबरन खदेड़ दिया गया है। उनमें से कईयों की हत्या कर दी गई है ताकि उनके जंगल को पशु चारा के लिए सोया खेतों में तब्दील किया जाए। सबसे बुरी तरह प्रभावित जनजातियों में से एक मातो ग्रोसो दो सुल की गुआरानी काउवा जनजाति है। Para nós indígenas, antigamente as florestas que é a nossa casa. Quem começou a destruir a nossa aldeia é através da agropecuária. Então derrubaram as nossas matas, destruindo os animais, os rios. Eu estou falando, agora vai plantar soja, aí depois vai passar veneno, né? Tudo coisa. Vai passar um adubo também, vai cair tudo no rio. E nós revoltando no sotecorrar, para sustentar a nossa família. So there was actually a report that came out in 2018 and they found that the world's top 5 livestock corporations now release more annual greenhouse gas emissions than ExxonMobil, Shell and BP. It is crazy when you think about it because the EU is spending £24 billion of taxpayers' money on livestock farming each year. And this is at a time when we are facing an ecological collapse and we drastically need to reduce greenhouse gas emissions. So it's no surprise that people are asking a lot of questions now about the fact that there seem to be some serious conflicts of interest going on here. There's some very heavy lobbying going on of government, and I think that happens throughout the world. And it's just a historic thing that needs to be, I think, rebalanced. As I've mentioned to you over the phone, I've worked with a number of large livestock companies around the world. So the way it works is that a representative from pays us usually up to €500,000. We then target the relevant politicians from different governments around the world, and motions are made to pass legislation in favour of the company's business strategies. For environmental policy, we can be very persuasive in order to abolish or heavily relax environmental regulations in government, so our clients have more freedom in their work. The other day we managed to kill proposed legislation that would have had a huge impact on the industry based on a report from the UN FAO. The industry is just concerned with growth, but the environmental data that's coming out now, it's really making that difficult for them. Today, democracy does not always function as well as it should because of the huge influence
that agribusiness corporations and livestock producers in particular exercise on decision-making. A former director of the United Nations Food and Agriculture Organization, Dr. Samuel Jutzi, warned as far back as 2010 that interventions by agribusiness lobbyists were blocking reforms that would offer better standards for human health and preserving the environment. Big animal agribusiness corporations and food producers' influence over political decisions about the regulation of their industry has long been a concern for campaigners who see the narrow interests of the industry taking widespread control. If we have any doubt about how powerful this influence is, we can recall that, for example, when the Advisory Committee on Dietary Guidelines in the US made recommendations to the US government as to how dietary guidelines should be shaped, they were blocked by this very powerful lobby of agribusiness interests. 2013 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने पशुधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पशुपालन समस्त वैश्विक परिवहन से भी अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि पशु कृषि का प्रभाव वास्तव में FAO रिपोर्ट में बताए गए प्रभाव से भी बदतर है। There are close ties between the research organisations and governments and government policy and industry. It's very pervasive because livestock industries depend on government policies that support them. The FAO report was prepared within the FAO by specialists of agriculture and livestock production, not by specialists of the environmental issues associated with agricultural production. I believe that a more serious concern, of course, is that the International Meat Association was involved in preparing the report, which does raise the question of the independence with which the study was prepared. Government policy in that regard is not for the benefit of the land, it's for the benefit of the industry. अपनी रिपोर्ट में FAO ने सदस्य देश, NGOs और कई अन्य संगठनों के साथ भागीदारी की, जिनमें यूरोपियन फीड निर्माता संघ, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मांस सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी परिषद शामिल थे। $1 ट्रिलियन से अधिक के उद्योग में क्या ये वही संस्थाएं नहीं हैं जिन्हें पशुपालन के खिलाफ एक हानिकारक वैज्ञानिक रिपोर्ट से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता? कम ही लोग होंगे जो समुंदर के बारे में डॉक्टर सिल्विया अर्ल से अधिक जानते हैं। डॉक्टर अर्ल अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन की मुख्य वैज्ञानिक बनने वाली पहली महिला थी। समुद्र तल पे बंधन बिना चलने का सबसे ज्यादा समय का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। When I was a child, the idea of a dead zone in the ocean was not even in our vocabulary. But in the 20th century, as agriculture began to greatly expand, the areas around the coast began to show signs of wear and tear. The first, most notorious spotlight area, I think, was off the Gulf of Mexico. And it has simply grown over the years, an annual phenomenon that is coincident with the application of massive amounts of fertilizer. हमारे द्वारा खाए जाने वाले जानवरों के आहार के उत्पादन के लिए लाखों वर्ग मील पर नाइट्रोजन उर्वरकों का भारी छिड़काव किया जाता है। नाइट्रोजन खेतों से बहकर नदियों और अंततः हमारे महासागरों में पहुंच जाता है। नाइट्रोजन युक्त पानी शैवाल की अतिवृद्धि को प्रोत्साहित करता है। परिणाम स्वरूप शैवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। शैवाल पानी में ऑक्सीजन का अभाव पैदा करता है, जिससे सारे समुद्री जीव मर जाते हैं। क्योंकि मांस की मांग बढ़ी है, तो ये कम ऑक्सीजन वाले डेड जोन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। There are hundreds of dead zones that have developed all around the coastlines of the world. And okay, people say that's too bad for the fish. So sorry, fish. But
We need to understand that what we do to the ocean, we're doing to ourselves. I want others to see and to see for themselves. This is all we've got, this little blue miracle. कुछ लोगों का मानना है कि मांस की बजाय मछली खाना हमारे ग्रह के लिए कम हानिकारक होगा। ये सरासर झूठ है। अगर महासागर मर गया तो हम इंसान भी शायद इसी के साथ मर जाएंगे। हमारी हर सांस की हवा हमारे महासागर द्वारा ही बनाई जाती है। विज्ञान पत्रिका नेचर के अनुसार हम 1950 के बाद से समुद्र में सभी बड़ी मछलियों का लगभग 90% खो चुके हैं। नेचर पत्रिका में ये भी लिखा है कि एक गहन अध्ययन के अनुसार अगर हम इतनी ही गति से मछली पकड़ते रहे तो 30 सालों से कम समय में सारे समुद्र खाली हो जाएंगे। IPBES अंतर सरकारी निकाय जो हमारी जैव विविधता की स्थिति का आंकलन करता है के अनुसार समुद्री जीवन विलुप्त होने का प्रमुख कारण मछली पकड़ना ही है। मछली खाने की हमारी आदत हमारे महासागरों से सारा जीवन ही चूस रही है। Today we have agreed on fishing opportunities for European fishermen worth more than 5 billion euros and benefiting more than 50,000 fishermen. The catches agreed today will continue to make the European fishing industry highly profitable also in 2019. नॉर्वे एक बहुत ही सुंदर देश, लेकिन इस सुंदरता के पीछे बहुत से काले राज छिपे हैं। नॉर्वे दुनिया में फार्म्ड फिश के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस उद्योग की कीमत अरबों यूरो में है। जैसे जैसे महासागरों में बड़ी मछलियां विलुप्त होने को आई, मछुआरे एक नियंत्रित वातावरण में मछली पालने की ओर मुड़ रहे हैं। नॉर्वे दुनिया में सबसे ज़्यादा सैमन और कॉड का पालन व उत्पादन करता है। आज लगभग 70% हमारी मछली कृत्रिम मछली पालन से ही आती है, क्योंकि हजारों मछलियों को ठूस ठूस के रखा जाता है छोटी छोटी समुद्री पिंजरों में। बीमारी और जूं आसानी से फैलती है। ये उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। नतीजतन बाजार में बेचे जाने तक मछली को जिंदा रखने के लिए कीटनाशकों, कीटाणुनाशकों और एंटीबायोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जूं हटाने के लिए खास पंपिंग नौकाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जो मछलियों को एक विशाल पानी के वैक्यूम में खींच लेती हैं।
मछली को तब सिस्टम में पंप किया जाता है और या तो उन्हें उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या रासायनिक घोल में नहलाया जाता है, जिससे पिंजरे में वापस पंप होने से पहले ज्यादातर जुएं मर जाती हैं। परजीवियों और बीमारियों को मारने के लिए मछलियों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एज़ेमेथिफॉस जैसे रसायनों से नहलाया जाता है और उनके खाने में टेफ्लूबेंज़ोन, एमामेक्टिन और डाइफ्लूबेंज़ोन जैसे रसायन मिलाए जाते हैं, जो कि मूल रूप से जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन रसायनों के अंश मछली में और अंततः इनको खाने पर हमारे शरीर में भी आ सकते हैं। फार्म्ड मछलियों के लिए ऐसा ही होता है पूरी दुनिया में। पर्यावरण कार्यकर्ता टैरन बिशप नॉर्वे के पश्चिमी तट पर बर्गन में स्थित एक संरक्षण संगठन ग्रीन वॉरियर्स के साथ मिल रहे हैं। ग्रीन वॉरियर्स कई सालों से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर मछली पालन की विनाशकारी प्रथाओं की जांच कर रहे हैं और इसके दुष्परिणाम टैरन को दिखाने जा रहे हैं। एक विशेष रूप से निर्मित सबमर्सिबल के जरिए वे पिंजरे के नीचे समुद्री तल को देख पाएंगे। समुद्र तल की चारों ओर मछली की अपशिष्ट, बैक्टीरिया और अखाद्य फीड से बने कीचड़ की एक मोटी परत होती है। खाने में मिलाए गए कीटनाशकों से ये कीचड़ भरा है। नई शोध बताती है दुनिया भर में मछली के उत्पादन में भारी मात्रा में जो कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं वो महासागर जैव विविधता पर विनाशकारी असर डाल रहे हैं। कीचड़ से बड़ी मात्रा में जलवायु गरमाने वाली मीथेन भी निकलती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि असल में मछली उत्पादन के कई तरीके अब गौमांस उत्पादन से ज्यादा मीथेन पैदा कर रहे हैं। लिव हम्फ्योर्ड नॉर्वे की मत्स्य पालन निदेशालय की प्रमुख हैं। हमें पता चला कि एक तरफ तो वो मछली उद्योग को नियमित करने की जिम्मेदार है और दूसरी तरफ खुद नॉर्वे की सबसे बड़ी मछली कंपनियों में से एक में हिस्सेदार भी हैं। कई संरक्षक ये मानते हैं कि उनका दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाना अनैतिक है। नॉर्वे की मछली उद्योग से जुड़े टैरन के सवालों का जवाब देने के लिए हम्फ्योर्ड राजी हो गई। Well, fish farming is quite a new industry in Norway. It started back in the 1960s with some local entrepreneurs starting with hobby, and it's grown until it's a billion euro industry today. And seafood is the second largest export industry in Norway, and fish farming accounts for 2/3 of the export value of seafood. So recently, we found out that you also have shares in one of the largest fish farm companies in Norway. Do you not feel that that's a conflict of interest? Of course, there could be a conflict of interest, but this is a fact that's been known since before I got this position, and I've been open about it. I'm not involved in the business from day to day or at any. So it's, and if there's, we have. And I have. Sorry, I have to. Do you have to start over again? Hva heter det for noe da? So all the decisions that I made will either be for the whole industry, not especially for this fish farm, or it's only an advice to the politicians, and the politicians are setting the limits and the actual regulations. So if there's an actual case handling regarding this company, then I will step aside. When on a few jobs I was working here over the years as a diver, we used to be around the fish farms cleaning the dead, deceased fish from the nets and fixing the nets, etc. after storms. And on occasion we'd seen some of the boats coming in to clean the lice off them. There's quite a lot of dead fish
you know, diseased or they've died. But it's a lot of pink mush, you know, not healthy look. Having seen what I've seen and worked on the various sites round about where I've been in Scotland, I wouldn't eat farmed salmon. No, I would have. Pretty rank. Salmon is marketed as healthy. It's also marketed in a very devious way, deceptive way, that they think it's a wild product. So it's a fake product, it's a fatty product, it's contaminated, it's marketed as healthy, but it's not. So salmon, if you see salmon, alarm bells should start ringing. It's pretty grim when you dive down to the bottom of the cages because, you know, we always see the bottom full of dead fish. And it's basically because many of these fish are so diseased, so parasite-ridden and laden with chemicals that they become sick and they live out their sad, short lives basically looking like zombies. You know, you don't see this when you go to the restaurant or the supermarket, but this is basically what a lot of the fish actually look like before it ends up on our plates. So tonight, Don wanted to show us how much of the farmed fish actually dies because of the very unnatural and unsanitary ways that they are kept. And they have rows of very large metal containers that they are constantly filling up with the dead fish. And I have to say that the smell as we get closer is actually pretty disgusting. So this is the sordid side of salmon farming in Scotland. This is the dirty secrets the industry don't want you to see. This is disease-ridden farmed salmon. It's 15 to 20% fat. That's where the contaminants, the cancer-causing contaminants, PCBs, dioxins, and the artificial colorings are. So this is something to be avoided at all costs. This is the salmon farm just here. We got freedom information, data from the Scottish Environment Protection Agency showing the use of over 50 tonnes of formaldehyde, not just at this site but other sites across Scotland. Is formaldehyde, may cause cancer, suspected of causing genetic defects, toxic if swallowed, may cause respiratory irritation, causes damage to organs. Do not breathe. One of the fish farm workers told us that the workers come down to the farm early in the morning, spraying the chemicals into the fish cages. So they're obviously spraying something down there in the water. The guy who gave us the tip-off said that toxic chemicals are widely used across Scotland, including formaldehyde and also hydrogen peroxide. And these are supposed to treat the diseases and lice problems which are both rampant across the fish farms. You know, these are not chemicals that you want in your body. Whatever he's spraying must be pretty powerful if he needs to wear a full protective chemical suit and a face mask. समुद्र 7 अरब लोगों का कबाड़ खाना बन गया है। मत्स्य पालक मछलियों को रासायनिक खाद से ठूसे जा रहे हैं। मछली खाना इतना जहरीला कभी न था।
You know, our oceans have become humanity's sewers. Everything eventually flows into the sea. So if you had a, time machine that could go back before the Industrial Revolution, it's a different story. But now, the highest levels of many of these persistent organic pollutants, we're talking about, DDT and PCBs and dioxins, the highest levels in our food supply are found in the aquatic food chain. Fish are not the safest choice anymore. So Tony, it's great to see you. Great to see you as well. Thanks for coming. Not at all. Thank you. A pleasure being here. So I wanted to ask you if you could share with us what exactly it was you began to feel when you realized something was going wrong. I was exhausted more than usual, and then I was losing short-term memory, and that scared the hell out of me. And then I tore my rotator cuffs in a really intense snowboarding accident. And the doctor said, "Do you want to do your metals test?" And I said, I got my amalgams out 25 years ago. He goes, "There's so many metals in the environment, you should do it." So I did. I get a phone call a week later, and I said to my assistant, "Just have him send the report." And he said, "No, it's an emergency. He has to speak to you." And I was like, no one wants to hear that. And so I called him up, and he said, "Tony, I showed your blood tests. You have extreme mercury poisoning. On a 0 to 5 scale, which is what we measure, 5 being toxic, you're 123. The doctor said, how long has this man been in the hospital?" And I just got off stage. So I said, I can't understand this. So I went out, and they thought, maybe someone was trying to poison me because the number was so high. And I was very disciplined. I was a vegan for 12 years, and then I just went salad fish. And they brought the medical group out here, and they looked at it, and I found this man named Dr. Shade, who's the only guy who has an ideation process where you can see where the mercury came from, and it was fish. It's been 3 years, and I had some severe moments. It burned a hole in my esophagus, and I literally collapsed. I lost a third of my blood supply. I could have died. I lost half my hemoglobin. People begin to lose their hair, their memory. They lose their memories, as you were doing, as you noticed. But they can also have headaches. They can complain of fatigue. They can also have depression. What we're seeing now is with the toxic environmental exposure, and especially with the mercury, methyl mercury in fish, is that everyone has got to be careful because the levels are going up. Udo, tell me, because your specialty is in this, how do you get the fish oils that we all need for the brain and for the body if we can't have fish? What do you suggest? Well, we used to get them from fish oils. Yes. But we can actually get them from vegetables. Flax is the richest source of omega-3 that everybody thinks should come from fish oil. If you get enough of that as starting material, your body will make what the fish oils make, and it'll be clean. Many people take fish oils or have fish for the long-chain omega-3 fatty acids. And you have to ask yourself the question, well, where do the fish get them from? And it turns out they get them from the algae in the ocean. They get them from plant food. So if you want the purest form of the long-chain, ready-made omega-3 fatty acids, the best way of doing that is simply to take an algae supplement, because then you've got the purest form of it and you don't have the extra risks of having the toxins and the heavy metals and the saturated fat and the cholesterol that you would get from eating a fish. यूएस सैन डिएगो में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी के शोधकर्ताओं ने मछली प्रदूषण पर विश्व के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक को अंजाम दिया। वैज्ञानिकों को विश्व के सारे महासागरों की मछलियों में जहरीले संदूषक मिले। Nobody would go to the nearest body of water and put in like a cup and drink the water. You're basically getting the concentrated toxins if we're eating fish. हमारे महासागर प्लास्टिक से भी भरे हुए हैं। क्योंकि महासागर इतने बड़े हैं, किसी भी वैज्ञानिक के लिए इसे ठीक से समझना एक चुनौती है कि ये प्लास्टिक आ कहां से रहा है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक्स की बढ़ती समस्या को बेहतर ढंग से समझने का एक अनोखा मौका देता है। ओशन क्लीनअप संगठन के वैज्ञानिकों की एक टीम जो इस पैच का अध्ययन कर रही है, उसे जानकर हैरानी हुई कि पैच में प्लास्टिक का ज्यादातर हिस्सा पीने के स्ट्रॉज या पानी की बोतलों से नहीं है, बल्कि मछली पकड़ने के फेंके हुए हजारों टन उपकरणों के टूटे हुए खरबों माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े हैं। पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रशांत महासागर में लगभग 80% प्लास्टिक फेंके गए मछली पकड़ने के सामान से बना है। कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि इस प्लास्टिक महासागर की समस्या को हल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे अहम कदम ये ले सकते हैं कि मछली की बजाय हम शाकाहारी खाना खाएं। At least half of the plastic in the sea today comes from discarded or lost fishing gear. Because all those nets, all those lines, all that stuff, it's just become a plasticized ocean. But we have a chance.
We have a chance right now to change our eating habits. There's an estimate that there's over 5 trillion tons of plastic currently floating in the ocean. It's absolutely everywhere. Everywhere we look, we found microplastics, whether it's at the polar regions, in remote islands. Also, if we're looking on the surface or the seabed, and everywhere in between, we find microplastics. We've also found microplastics in just about every animal group that we've looked in. We've been sampling for microplastics for quite a while now, and we found that there's 27 times more bits of plastic than there are fish larvae. माइक्रोप्लैंक्टन सभी महासागर में पाए जाते हैं। ये फिल्टर फीडर है। जहाँ प्लैंक्टन होते हैं, अगर वहाँ माइक्रोप्लास्टिक भी हो, तो शोधकर्ताओं ने पाया है कि वे लगातार प्लास्टिक के कणों को खाते हैं। इस बात से अनजान कि छोटे कण जहरीले रसायनों से बने होते हैं, प्लैंक्टन उनका अंधाधुंध सेवन करते हैं। शोधकर्ता देखते हैं कि इन छोटे समुद्री जीवों के अंगों के अंदर रसायन कैसे जमा होते हैं। जहरीले प्लैंक्टन को फिर बड़ी मछलियां खा जाती है और शोधकर्ताओं ने पाया कि आज हम जो मछलियां खा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ने रसायनों को अपने मांस में जमा कर लिया है। प्लिमथ यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि टेस्ट की गई सभी मछलियों में से 1/3 से ज्यादा में माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। हम जब इन दूषित मछलियों को खाते हैं, यही जहरीले रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और शोध बताते हैं कि वैसा ही जहरीला संचय इंसानों के शरीर में पाया जाता है। Our scientists tell us we're now in the 6th extinction event of life on this Earth. It doesn't even make the headlines. No one even knows about it. Saya kesemai, walaupun ni mati kena, hati mereka ni mati kena. Nani ke, yaro siapa ni te? Sia hanya saya melekati sebenarnya. Tony na waku ke ban. Thera ate nekeni. Saya tidak ni saya metani. Saya nunu ada yang nunu ni te. Saya potongnya nunu. Thera ati mereka. Ayo romera. Thera na bekas na henikan hacker. Ate di tali haba. Nekeni, saya kepe pasti dihaga. Saya lah yang negara baik na. Ni nane, neno kapan? Tahu apa ni ti? Thera ati mereka. Nyaro bana kapa na yuk kepe ni kere thera ni kanone nya se de ni tho apa ni kanone na waikana oti pete apa ni. We've had 5 mass extinction events on this planet in 450 million years. Let me be clear on this. The last time we had an extinction event of this magnitude was 65 million years ago. It's incredibly sad to realize just how many species, both in the oceans and on land, that we're losing at the moment. And
It's up to all of us to make sure that this doesn't happen in the future. Today, over 26,000 species are currently threatened with extinction, and the most important driver of that is our use of land for agriculture. Over time, livestock have been a major driver of biodiversity loss. Some have predicted that by 2045, the species loss will be so great that we won't recover. The Earth will suffer ecological collapse. And the biggest thing you and I can do is change our diet. कुछ वैज्ञानिकों ने इस मौजूदा संकट को जैविक विनाश कहना शुरू कर दिया है। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की विज्ञान पत्रिका साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट के अनुसार पशुपालन जैव विविधता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण है। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अगर पूरी दुनिया पशुओं से प्राप्त आहार न खाए तो हम दुनिया की 75% से ज्यादा कृषि भूमि मुक्त कर सकते हैं और पशुपालन के लिए काटे गए जंगल दोबारा बहाल किए जा सकते हैं। दुनिया में कई बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं जहां ऐसा ही किया जा रहा है। इकोसिया गूगल के समान एक ऑनलाइन सर्च इंजन है। ये अपने विज्ञापन से प्राप्त कमाई स्थानीय समुदायों को पेड़ लगाने के लिए देती है। इकोसिया के एक मुख्य वन संरक्षक हैं मोरिसियो। ये ब्राजील में वर्षा वनों को फिर से उगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। Plantei minha primeira árvore, eu tinha 5 anos de idade. Eu nem imaginava que 20 anos depois, esse esforço tão pequeno teria virado uma das iniciativas que mais plantou árvores na história do Brasil. Foram mais de 2,5 milhões de árvores, 2.000 hectares plantados, muitas áreas preservadas pela ação de combate a incêndios florestais. पेड़ ही हमारी दुनिया को जिंदगी से सजाते हैं। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो इस धरती पे अपने ही भविष्य के बीज बोते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने गहन अध्ययन किया कि हम जो खाते हैं उससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्को स्प्रिंगमैन की अध्यक्षता में किए गए इस ऐतिहासिक अध्ययन में पाया गया कि अगर हमें पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित खतरनाक 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे तापमान रखना है तो अमीर देशों में मांस की खपत को लगभग 80% तक कम करना होगा। Policymakers have been very reluctant to address the livestock issue. It's entirely out of keeping with the urgency of the crisis that we're facing. Hi, Otto Brockway for Brockstar Films. This is a question for Commissioner Hogan. The scientists at Oxford University have been very clear that livestock farming has a far greater impact than plant-based farming. With this in mind, would it not be common sense to reduce the billions in subsidy payments to livestock farming in Europe and offer them to plant-based farming instead as an incentive to a much more sustainable food system? We have made our proposals based on protecting the farmers because they are, unlike you and I, they're out in all sorts of weathers and in all sorts of market risks. And you and I may not know anything about that because this is their lives. They're producing high quality food for us all so that we can have this particular good quality products available to us at all times. Sometimes under local conditions like organic, more times it's conventional farming. So we provide financial support at the moment for that. And it's a public good that's not always recognised. But the movement of our policy is in the direction of our farmers being centrally involved in providing more public goods. And if you want to do anything in life, you have to pay people. Sometimes I understand that there's a moral obligation and there's people of principle. But most of the time, 99% of the time, they have to get paid. So as professionals that we're expecting to provide good quality food and do more on public goods, we pay our farmers. This is a decision that we make at political level. Livestock emit methane and nitrous oxide. Now, most people, when they think of climate change, they think of CO2, carbon dioxide, which is a very potent global warming gas. But methane is 25 times more potent per molecule when it's released than CO2.
And nitrous oxide is 298 times more potent per molecule than CO2. These are very powerful global warming gases. So today we have a very special camera called a hyperspectral imaging camera, and it basically enables us to be able to see gases that would be otherwise invisible to the naked eye. And today we're looking at methane gas. Methane is a gas that is being produced by cows when they belch. 1750 के बाद से मीथेन वातावरण में पैदा होने वाली अन्य गैसों के साथ पूरे ग्लोबल वार्मिंग के 1/3 हिस्से का कारण बना है। पशुधन मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। मीथेन उत्सर्जन में भारी कटौती ग्लोबल वार्मिंग को 15 से 25 वर्ष तक धीमा कर सकती है। आने वाले कठिन वर्षों में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध यही हमारा सबसे प्रभावी शस्त्र है। Look at that. Wow. जलवायु गैसों की विभिन्न ताप क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए हम इंफ्रारेड अब्सॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट नामक एक प्रयोग को देख सकते हैं। यहाँ हम बर्फ से बनी पृथ्वी की आकार की 4 प्रतिमाएं देख रहे हैं और इनमें से हर एक अपने वायुरोधी कक्ष में है। ये कक्ष हमारे ग्रह के चारों ओर मौजूद वातावरण को दिखाता है। इनमें से हर एक के ऊपर एक इंफ्रारेड हीटर रखा गया है। सबका तापमान एक सा है। फिर हर एक को एक अलग गैस से भरा जाता है। पहले कक्ष में वही सामान्य हवा भरी जाती है जिसकी हम सांस लेते हैं। दूसरे कक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है जो जलवायु को गर्म करने वाली जानी मानी गैस है। तीसरे कक्ष को मीथेन से भरा जाता है। ये गैस पशुपालन के साथ जुड़ी है। चौथे कक्ष को नाइट्रस ऑक्साइड से भरा जाता है। ये भी पशुधन से संबंधित गैस है। समय के साथ साथ हमें नजर आने लगता है कि सामान्य हवा के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड कक्ष का गोला थोड़ा पिघलने लगा है। पर इसी दौरान मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कक्षों में तेजी से पिघलाव होता है क्योंकि सामान्य हवा और कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले इनमें तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ता है। 16 घंटे बाद नतीजे एकदम साफ दिखते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पशुपालन से पैदा होने वाली 2 मुख्य गैस मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जलवायु को गर्माने वाली मुख्य गैस हैं। दुनिया भर में हर साल इंसान की खुराक के लिए करीब 70 अरब जानवरों को पैदा किया जाता है। इनमें से लगभग 90% मुर्गे मुर्गियां हैं। एक बड़ी समस्या ये है कि मुर्गे मुर्गियों की खपत लगातार बढ़ रही है। बेशक रेड मीट की तुलना में चिकन का पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़ता है, पर चूंकि पूरे विश्व में अब 90% मुर्गी मुर्गियों की सघन रूप से उपज की जाती है, तो इसका हमारे ग्रह पे विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट है। अगर तुलना करें मांसाहारी और शाकाहारी प्रोटीन जैसे काबुली चना के बीच, तो बेशक चिकन रेड मीट की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो सकता है, परंतु काबुली चना के मुकाबले ये प्रति कैलोरी 40 गुना ज्यादा जलवायु को गर्म करने की वजह बनता है और यही नहीं 50 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। We know that if we would shift from ruminant meats to other meats, then we probably would reduce our footprint just from that particular product by about a factor of 10, which is quite a bit. But if you compare that with how much you would reduce your footprint if you went to plant-based products, that is about a factor of 100. And that's the reason why shifting towards more plant-based diets has such a big impact, because we're really talking about different scales here. कहते हैं कि ऑर्गेनिक मांस का पर्यावरण और जलवायु पर कम प्रभाव पड़ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से पता चला कि जैविक या पारंपरिक तरीके से उत्पन्न मांस का ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर मामूली ही प्रभाव पड़ता है। So in our data we didn't find big differences between organic and conventional across multiple indicators. What we did find is that no matter how you produce animal products, even the lowest impact forms of production still create higher emissions and use more land than typical vegetable proteins. So that's saying something really important. That's saying that even if you go into the shops and try and purchase sustainable meat or dairy, it's always going to be better to purchase vegetable proteins instead.
हर साल अमेरिकी सरकार फलों और सब्जियों की खेती पर $2 करोड़ की सब्सिडी देती है, पर मांस और डेयरी उत्पादन को $38 अरब का भारी भरकम अनुदान मिलता है। अब ये अनुमान लगाया गया है कि मांस और डेयरी उत्पादन की खपत से होने वाली बीमारियों के कारण अमेरिका के करदाताओं को करीबन $314 अरब की चपत लगती है। When you cram, tens of thousands of animals in these cramped, filthy, unhygienic conditions, basically live atop their feces, it's just like a breeding ground. Animal to human diseases that arise because of the way we're now treating animals, whether it's these live animal markets in East Asia, whether it's the bushmeat trade. And the concern is that with enough spins at genetic roulette on these swine factory farms, these chicken factory farms, we're gonna, end up with one of these viruses that's not only deadly to chickens, but can jump and transmit human to human and cause the next human pandemic. The risk of large-scale factory farmings increases the risk that or the likelihood that we might have a pandemic, particularly of influenza in the future. This pandemic has been very severe, but this is not necessarily the big one. स्वाइन फ्लू के कारण 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। माना जाता है कि शुरुआत सूअर पालन से हुई। अनुमान है कि एड्स और इबोला वायरस जंगली जानवरों को खाने से आया है, जबकि मर्स वायरस ऊंटों के मांस और उनके दूध की खपत की देन है। कहते हैं सार्स वायरस जिंदा जानवरों के वेट मार्केट से फैला था और ऐसे ही कोविड-19 भी पैदा हुआ। बर्ड फ्लू के बारे में भी यही माना जाता है कि ये चिकन फार्म्स और एनिमल वेट मार्केट से आया है। बोलते हैं कि मीजल्स यानी खसरा पालतू गायों से पैदा हुआ। People know now what a global pandemic feels like. They've seen the effects. They will be feeling the effects for many years to come. And this is a chance, I think, an opportunity to point out that this particular route of infection is a very concerning one. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वो समय नजदीक ही है जब एंटीबायोटिक्स बेअसर हो जाएंगे और तब हाथ पर एक मामूली सी खरोंच भी घातक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हमारी चमत्कारी जीवनदायक एंटीबायोटिक्स फजूल पड़ेंगी। ऐसा इंसानों के सेवन से नहीं बल्कि जानवरों पे हर रोज प्रयोग करने से हो रहा है। So having been a butcher for 6 years, one thing I know is that if people knew what happened in the production of their food, they wouldn't eat meat. So one of the things that we would hit every day was pus nodules, tumors, cysts. It was something that we would hit on a daily basis. Having worked in a supermarket chain, I saw this firsthand every single day. So here's one that's running along the shoulder blade. Oh. Yeah, that is what I remember in the butchery. It comes out like a thick toothpaste. I remember that every single day. That's interesting to hear you had that experience all the way over there, because in the UK, exactly the same. Yeah. We would see that on a daily basis. But those people who say it's not my butcher does this, they need to open their eyes, because if their butcher's being honest with them, we know. Yeah. We both know. And any honest butcher's going to admit it. They're not going to want to tell the public because it's going to affect their business. Yeah. But it is a fact. And me working in multiple butcheries, I saw these common trends across the board. So I know that it wasn't just isolated to the one that I was working in. It was across the board for me. People need to reconnect with what they're eating, and the whole process that we're talking about here of how that food gets to them is hidden from them, and it's hidden for a reason. Because if they saw it, it would most definitely make them want to think harder about what they're eating. चूंकि हमारे महासागर और वातावरण गर्म हो रहे हैं, हमारे ग्रह के जल चक्र भी बदलने लगे हैं। Climate change changes the water cycles of the planet. The heat that's being generated is forcing the precipitation into the clouds, so we're getting more concentrated precipitation in our clouds and more dramatic, extreme, and unpredictable water events all over the world.
ताइवान प्रशांत का एक दूर दराज द्वीप है जिसके उत्तरी हिस्से के ऊंचे पहाड़ों पे अटायल जनजाति के लोग रहते हैं। ताइवान के लिए चरम मौसम कोई नई बात नहीं है, पर अब टाइफून्स की भयावहता और आवृत्ति आसमान छू रही है और इससे अटायल जनजाति और उनकी जीवन शैली पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। Joro laki ku cipok na to ki ga ya ba utukai meniak nak sya ga joro bala meniak nek ini pejuh meniak na wi Babaw na ka siga tokah tananak mengedung naga ta nyan yakah na orasyo yakah lungan dala lungun dala ga nyan mahsyakah लेकिन जहां दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का आना बढ़ रहा है, वहीं कई जगह इसका उल्टा हो रहा है। दुनिया का अधिकांश हिस्सा चरम सूखे के चपेट में आता जा रहा है। लाखों किसानों को अपने खेतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे हजारों टन फसलें बर्बाद हो रही हैं। I'm definitely worried about the future of our farm. I think we're seeing, much more, many more swings in climate than we've seen in the past. But we want to use all the land that we have to grow food, but we haven't been able to just because of the shortages of water. It'll have an impact on food supply and prices and availability. And so estimates now are between 500,000 to over 1 million acres of farmland that'll come out of production in California. अल्मरिया स्पेन के दक्षिण में है और यहाँ 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भीतरी सब्जी के खेत मौजूद है। अल्मरिया यूरोप के कुल फल और सब्जियों के उत्पादन का 50% पैदा करता है, जो यूरोप के खाद्य सप्लाई का अहम हिस्सा है। पर चिंता की बात ये है कि स्पेन पिछले 20 साल से सूखे की चपेट में है और विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से है। In terms of water, the truth is that the drought in Spain has become a complete catastrophe. Our harvests are decreasing in massive quantities. Last year, in the area we are now, there was almost no harvest. People don't realize the food system is collapsing. दुनिया की जलवायु प्रणाली में आए बदलाव के कारण सारे अफ्रीका में सूखे की समस्या गंभीर हो गई है। जिन नदियों और झीलों से लाखों करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है, वो अब सूखने लगी है। इन घटते संसाधनों को लेकर नए संघर्ष सिर उठाने लगे हैं और लोग जान बचाने के लिए उत्तर की ओर पलायन करने लगे हैं। बदली जलवायु के शिकार ये शरणार्थी सब कुछ दाव पे लगाकर यूरोप के सुरक्षित किनारों तक पहुंचने के लिए जी जान से कोशिश में हैं। इस सामूहिक प्रवास को रोकने के लिए स्पेन ने अपनी दक्षिण सरहद मलीला में एक विशाल दीवार खड़ी की है। हजारों शरणार्थी सरहद को पार करने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे हैं, जो स्पेन के पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पलायन का ये सिलसिला और तेज होगा और ये बात भी बिल्कुल साफ है कि हमारी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। Osbal, Andral, Osqueherbet, Mochelpurn.
का गोबी रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, ऐसे जैसे कोई राक्षस अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को लीलता जा रहा हो। इंसान और पशुओं को जीवन देने वाली कई झीलें अब सूख गई हैं। अगर झीलें इसी तरह गायब होती जाएंगी तो लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर दूर दराज और अजनबी इलाकों में बसना पड़ेगा। Уулс тэгшхэн сайхан байсан цаг саяхан санагдах юм. Өгшчүүл хангаа дэлхийн нэг л өөр болоод байна гэцгээж байна. Монголчууд байгаль дэлхийдээ дасан зогцож амьдэрсаар ирсэн. Гэхдээ байгаль орчин арай л дэндүү огцом хувьсаж байна уу та гэж. Энэ дэлхий дээр ам өрсөж үлдэхийн тулд их л төвчээртэй хатуужилтай байх хэрэгтэй болох нь дээ. A lot of people talk about how much fresh water we use for hydrofracking. 700 billion gallons globally is wasted on fracking. So 700 billion gallons. Sounds like a lot, but animal agriculture, the production of animals that we use for meat around the globe, uses 70 trillion gallons of fresh water a year. Hundreds of thousands of times as much as fracking. And we give the cows and the chickens the good stuff, right? They don't get the Flint, Michigan, lead-tainted condoms floating in it water. They get the top shelf stuff because we don't want to screw up our sausage links. And I know what some of you are thinking right now. You're thinking, oh, here's the part. I'm a vegetarian and pigs are people too, meh. But no, let's ignore how the animals are treated in our factory torture farming. Let's pretend they're treated amazing for just a minute. It's like a celebrity backstage at the Oscars. They're just being fawned over and they get swag bags with free Apple Watches. Point is, you should still be upset about this because animal agriculture is killing us. And corporate media is fantastically pathetic on this topic. They never mention meat production. They never mention that a quarter pounder takes 660 gallons of fresh water to create. That's the equivalent of showering for 2 months. So one usually underestimated impact of livestock production is the huge amounts of fresh water required for that production to be maintained and to be increased. The problem is that in many places water is being used much faster than the natural renewal rates. Overall, in the world, 1.8 billion people are living in areas with severe water scarcity. The livestock sector is the single biggest water user in the world. 1/3 of the water use in the world is being used for producing animal products, meat and dairy. And it's not because those animals drink so much, it's really because there's a lot of water required to make the feed for the animals. If we want enough fresh water for future generations, water alone dictates that we must change our diet away from meat and dairy. विश्व भर से ये सबूत आने लगे हैं कि लोग पशु मुक्त भोजन की तरफ मुड़ रहे हैं और इससे जरूर कुछ उम्मीद बनती है। 2021 में 5,80,000 लोगों ने ब्रिटेन की वेगान्यूरी अभियान के लिए अपना समर्थन दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुमान लगाया जाता है कि ब्रिटेन में 40 लाख से ऊपर लोग वीगन हैं। अनुमान के अनुसार कनाडा में आबादी का 10% हिस्सा या तो शाकाहारी या वीगन है। अमेरिका में पिछले 3 सालों में वीगन जीवन शैली में 600% बढ़ोतरी हुई है। इस कारण रसोइयों ने मेन्यूज में वीगन व्यंजन शामिल कर लिए हैं। A few years ago, it was quite a challenge to get hold of good vegan food, but today we're pretty much spoilt for choice and there are vegan options everywhere. What do you think? It tastes like a normal hot dog. Is it a normal hot dog? Like as in like, or is this like plant-based or something? So it is actually plant-based, yeah. So everything. It's really nice. I prefer it because I don't really eat meat that much, so this is good. Okay. Well, I like meat and it tastes good. Yeah. For not being meat. Would you be happy with that? Yeah, I'd be stoked. I love meat too much.
So I feel like if I went plant-based, I'd miss it. But if this like stuff tastes the same, yeah, I'd be very happy with this. Nice messy fingers. It is, yeah. Sounds good burger. Thank you. Would it interest you to know that that's completely plant-based? And I wouldn't know. So that I would definitely, wow, that's a winner. Yeah, I'm amazed. If burgers always tasted like that, would you be happy to just not eat a beef burger again? Yeah, no, I got good veg, yeah. Yeah? I'd like you to tell me which one of these nuggets is plant-based and which one is real meat. Okay. It's very hard to say which one is. They taste exactly the same, honestly. These are not the chicken. No. That's interesting. Which one of this is animal meat and which one of this is plant-based? Meat or not meat? You're not sure? You're not sure? Yeah, you're not, yeah, I'm not sure. Meat. You? Yes. Are wrong. Okay. Okay. But you think the second one was chicken? Yeah. The second one was actually plant-based. No way. Yeah, and the first one was chicken. Yeah. Okay, I didn't. I couldn't have guessed that. I definitely thought the first one. Yeah, definitely. It seems that changing what we eat to a more sustainable diet can also coincidentally be very beneficial to our health. There is a growing understanding that we can actually prevent, and in many cases even reverse, some of our most common diseases, all through a shift towards a whole food vegan diet. Humans can survive on many different kinds of diet, but many decades of research has now shown us that the best way of not just surviving, but truly thriving is on a whole food plant-based diet. A human can be healthy on a plant-based diet without any animal products. The major dietetic associations around the world, including the British Dietetic Association, have produced statements to say exactly that a diet made up of whole plant foods is healthy for humans all stages of their life. And not only can they be healthy, but they can restore or reclaim their health adopting a plant-based diet. There are certain areas, certain populations around the world that have extraordinary health and longevity. For example, the largest number of centenarians, people that live over 100, these so-called blue zones. What's really interesting about the blue zones, they actually have more centenarians than anywhere else in the world. And a centenarian is someone that lives at least 100 years. But what's really interesting about the blue zones is when people reach these advanced ages, they are still productive. So the blue zones have taught us a lot. And the bottom line is we really want to try to emulate what the people of the blue zones are doing. जिन 5 क्षेत्रों को ब्लू जोन्स कहा जाता है वो है जापान में ओकिनावा, इटली में सार्डिनिया, ग्रीस में इकारिया, कोस्टा रिका में निकोया और कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा. So the question is, well, what do they all have in common? They have a predominantly plant-based diet. They have a diet rich in fruits and vegetables, whole grains, beans, soy, lentils, chickpeas. They have a diet rich in all these nutrients, and that's one thing that they have in common. So the EPIC study is the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. It followed over 500,000 individuals from 10 European countries for more than 15 years. Those in the EPIC study that were eating predominantly plant-based or eating high levels of fruits and vegetables lived longer, had lower incidence of cancer and heart disease. About 2,500 of the individuals in the EPIC Oxford only ate plant food, so they were vegan. And even though they weren't the most healthy vegans or healthy plant eaters, you could show that these plant eaters were healthier. They had a lower incidence of heart disease, diabetes and cancer. From everything we have discovered on this journey, it seems that moving away from animal foods to plant-based foods instead can not only give us a whole host of amazing health benefits, but also gives us a chance to be able to leave a sustainable planet for future generations to come. Perhaps the single most meaningful change that we can make as individuals is ultimately deciding what ends up each day on our plates. We are running out of time. The world community must acknowledge that animal agriculture is the most destructive industry on our planet.
We can't wait for government policies and other organizations to create a better life for ourselves. We need to stand up now and make our voices heard. Globally, for the typical consumer, avoiding meat and dairy is probably the single biggest way to reduce your impact on Earth. Without addressing what we eat, we simply won't make it. This is a #1 priority. This is a next step in taking responsibility for our communities, our planet, our biosphere, our fellow species. People say, what can I do as an individual? It feels overwhelming. Well, you can make individual choices. We all can. Our individual choices affect the collective choices. When you hear about airplanes and cars, and we're still going to use those things. But the choices we make in our diet, this agricultural business where we use animals as the primary source of protein, the one thing I think we can all do is, and individuals, is make our own individual choices, how we're going to live, how we're going to eat. Plant-based diet makes all the difference in the world. Just make some choices that are good for you, and being good for you will be good for the planet. पृथ्वी ही हमारा घर है। भविष्य कैसा होगा ये तय करना अब हमारे हाथ में है। इतिहास गवाह है कि जब जब हम किसी उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी दुनिया बनाने का मौका है जिसमें हम खूब फल फूल सके, लेकिन वक्त का कांटा लगातार चल रहा है। समय कहीं हाथ से निकल ना जाए।